everyone. Welcome to all in the series of real analysis. तो आज का हमारा टॉपिक है continuity and uniform continuity. तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं continuity. So a function f is said to be continuous at a point C if for given epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 such that fx minus fc is smaller than epsilon whenever x minus c is smaller than delta. ठीक है, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc और लिमिट x tends to c negative, that means left hand limit of fx equals to right hand limit of f equals to fc. ठीक है, सो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा किसी एक पॉइंट पर, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट मॉड्यूलस ऑफ fx माइनस fc इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस c इज स्मॉलर देन डेल्टा. कोई c पॉइंट है जो x के बहुत ही पास है, ठीक है, x माइनस c का जो मॉड्यूलस है स्मॉलर देन डेल्टा, दैट मीन्स x c बहुत ही पास है x के, देन fx माइनस fc इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन, दैट मीन्स fc जो हो fx के वो भी बहुत पास है. ऐसा नहीं है कि देखिए एक मैं ग्राफिकली समझा देती हूँ. जैसे सपोज हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन था, इस टाइप से था, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे था. ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट क्या है 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 1, बट जब हम इधर से इसको 1 की तरफ अप्रोच करेंगे 1 माइनस h व्हेन h टेंड्स टू 0, ठीक है, इस टाइप का कोई भी पॉइंट होगा उस पर वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी. ठीक है, एंड 1 माइनस 0 स्मॉलर देन एप्सिलॉन नहीं है. ठीक है, देखिए 1 माइनस h, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 और ये क्या हो जाएगा प्लस h एंड h टेंड्स टू 0, सो ये इक्वल टू 0 आ गया. एंड 1 माइनस 0 स्मॉलर देन एप्सिलॉन नहीं है, 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन तो बहुत छोटा है. ठीक है, तो इस तरीके से समझिए. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए. A function f is said to be discontinuous at point A
if f is not continuous, at point A. एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, f is said to be continuous in an interval AB if it is continuous at every point of the interval AB, ठीक है। Show that the identity function f defined on R by fx equals to x for all x belongs to R is continuous on R, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन किस टाइप का होता है, तो ग्राफिकली अगर पूछे इसको कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, हाँ ये कॉन्टिन्यूस है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। एंड ये कोई भी पॉइंट ले ले इसका अगर हम, तो राइट से एंड लेफ्ट से RHL और RHL उसकी सेम ही आएगी एंड उस पॉइंट पर वैल्यू भी उसकी वही होगी, ठीक है। तो ग्राफिकली देखें तो हाँ ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, बट हम इसको लिखेंगे कैसे, हमें तो लिखना है। चलिए, लेट x be any point of R and xn be a sequence in R converging to x, then fxn equals to xn for all n। अब देखिए, now limit fxn equals to limit xn equals to limit x equals to fx, ठीक है। सो अब देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन में, कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है इफ एंड ओनली इफ कोई भी सीक्वेंस xn जो x पर कन्वर्ज करेगी उसके लिए जो fxn है वो कन्वर्ज करेगी fx पर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि xn कन्वर्ज कर रही है x पर, देन fxn जो है वो कन्वर्ज कर रही है fx पर। सो जो फंक्शन है fx वो कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। Since xn converging to x implies
fxn converge to fx. Therefore, identity function is continuous at x. हर एक पॉइंट पर x हमने कोई भी पॉइंट ले लिया था, ठीक है. सो hence f is continuous on R. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. Let f be the function defined on closed interval -1 to 1 by fx equals to x when x is irrational, and 0 when x is rational. ठीक है. Then show that f is continuous only at 0. Then show that f is continuous only at x equals to 0. तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं. लेट a be any point of closed interval -1 to 1. Then हम क्या करते हैं, फॉर ईच पॉजिटिव एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं an और एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं bn. देन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर we choose a rational number an and an irrational number bn. और an and bn ये जितने भी हैं सारे क्लोज इंटरवल -1 to 1 में बिलोंग करेंगे. बोथ इन क्लोज इंटरवल -1 to 1 such that an minus a is smaller than 1 upon n and bn minus a is smaller than 1 upon n. ठीक है. ऐसा हम कर सकते हैं बिकॉज देखिए कोई दो पॉइंट है. सपोज ये 1 है एंड ये 1 के बहुत पास है. 1.002 ले लेते हैं सपोज. इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स होंगी एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स होंगे. ठीक है. इससे पास भी हम कोई पॉइंट ले लेते हैं 1.0000 समथिंग. तो उसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स बिलोंग करेंगी. ठीक है. तो लिमिट ऑफ an क्या हो गई a and also limit of bn equals to a. By Archimedean property, for any epsilon there exists and belongs to n such that 1 upon n is smaller than epsilon. Sorry, it is epsilon. ठीक है. तो हम यहाँ अगर
ये लिख दें कि an minus a is smaller than 1 upon n and modulus of bn minus a is smaller than 1 upon n, then limit of an equals to a and bn, limit of bn equals to a. देखिए, but we know that if f is continuous at a, then we must have limit an fan equals to fa equals to limit fbn. ठीक है, देखिए, कोई भी एक पॉइंट होगा a, कोई रियल नंबर है, देन उसके बहुत पास रेशनल नंबर भी बहुत सारे होंगे एंड इरेशनल नंबर भी बहुत सारे होंगे. तो अगर हम किसी एक पॉइंट a जो r से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स जो रियल नंबर है, अगर हम उस पर लिमिट चेक कर रहे हैं, सो हम RHL एंड LHL हम रेशनल नंबर पर चेक करेंगे एंड इरेशनल नंबर दोनों पर चेक करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ये an जो सीक्वेंस है वो रेशनल नंबर की सीक्वेंस है एंड bn जो सीक्वेंस है वो इरेशनल नंबर की सीक्वेंस है. ठीक है, सो अगर f जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा a पॉइंट पर, देन कोई भी सीक्वेंस an एंड bn, an रेशनल नंबर की सीक्वेंस है एंड bn इरेशनल नंबर की सीक्वेंस, अगर वो कन्वर्ज कर रही है a पर, देन fan एंड fbn बोथ कन्वर्ज करेंगी fa पर. ठीक है, सो हम लिख देते हैं नाउ fan equals to 0 for all n because an is a sequence of rational number. ठीक है, and fbn equals to bn for all n. ठीक है, सो अब देखिए, अगर कॉन्टिन्यूस है a पॉइंट पर, अगर f a पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, देन fa को क्या होना पड़ेगा, 0, एंड साथ में लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटिव fbn, इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0. fbn इक्वल्स टू bn बिकॉज bn इज अ सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड हमारा फंक्शन डिफाइन था कि 0 होगा इफ x बिलोंग्स टू rational and x होगा if x belongs to irrational, f of x. ठीक है, सो अगर कोई फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है पॉइंट a पर, देन लिमिट ऑफ fan इक्वल्स टू fa इक्वल्स टू लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटिव fbn, ये होगा. ठीक है, एंड हमारे पास क्या क्या आ गया कि an है वो 0 है, क्योंकि an जो सीक्वेंस है वो है रेशनल नंबर की सीक्वेंस एंड रेशनल नंबर पे fx क्या है, 0. सो fn जो है वो कांस्टेंट, fan जो है वो कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई, सो इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0. इसका मतलब क्या हो गया, जो fa है एंड लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटिव fbn है, उसको भी क्या होना पड़ेगा, 0. ठीक है, सो ये 0 कब होगा, when a equals to 0. ठीक है, this implies that fa equals to 0 and limit of fbn क्या होगी, a. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन है वो सिर्फ
0 पर कॉन्टिन्यूस हो सकता है। हमारे पास कंडीशन आ गई कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पर देन वो पॉइंट 0 ही होगा। ठीक है, सो देयरफॉर 0 is the only possible point of continuity। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं 0 पर। Now we shall show that f is actually continuous at x equals to 0. So let epsilon is greater than 0 be a given number, be given, and delta equals to epsilon by 2. Delta को epsilon by 2 ले लिया, then x अगर smaller than delta है imply करेगा कि जो fx minus f0 है equals to 0 whenever x is rational। ठीक है, क्योंकि हर एक रैशनल पर fx की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, एंड x is smaller than modulus of x is smaller than delta implies fx minus f0 equals to x and x is smaller than delta which is smaller than epsilon whenever x is irrational। ठीक है, क्योंकि इरेशनल पर f की वैल्यू क्या है x, सो fx माइनस f0, fx पर वैल्यू क्या हो जाएगी x एंड f0 पर तो 0 है, सो ये मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा एंड मॉडुलस ऑफ x इज स्मॉलर देन डेल्टा एंड डेल्टा को क्या लिया था एप्सिलॉन बाय 2, तो डेल्टा इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन। ठीक है, सो देयरफॉर fx minus f0 is smaller than epsilon whenever x is smaller than delta. So f is continuous at x equal to 0. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। So a function f defined on an interval is said to be uniform continuous on interval I if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx2 minus fx1 is smaller than epsilon
for arbitrary points x1, x2 belongs to the interval I. For arbitrary points x1, x2 belongs to interval I, for which x1 minus x2 modulus of x1 minus x2 is smaller than delta. ठीक है, सो देखिए मेन डिफरेंस क्या है कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में कि फॉर कॉन्टिन्यूटी एट एनी पॉइंट A the choice of delta depends upon epsilon and the point A, but in uniform continuity the choice of delta is depends only on epsilon. किसी भी पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा कि कोई इंटरवल का कोई एक पॉइंट है उस पर डिपेंड करेगा, नहीं, सिर्फ डेल्टा पर, सिर्फ एप्सिलॉन पर, सॉरी, ठीक है। एंड जो कॉन्टिन्यूटी है वो किसी हम एक पॉइंट पर डिफाइन करते हैं एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एक इंटरवल पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट एक थ्योरम लिख लेते हैं, थ्योरम every uniform continuous function on an interval is continuous on that interval. Every uniformly continuous function on an interval is continuous on that interval. ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। So let f be a uniformly continuous function on an interval I then for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx1 minus fx2 is smaller than epsilon whenever x1, x2 belongs to I, for which modulus of x1 minus x2 is smaller than delta. ठीक है, now let x belongs to I. Then हमने क्या ले लिया, x equals to x1, ठीक है। We find that for every, सिर्फ यहाँ पर x1 को हमने क्या ले लिया, x, उल्टा लिख दिया मैंने, x1 को क्या ले लिया, x, क्योंकि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू I है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है कोई इंटरवल I को। We find that for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus fx2 is smaller than epsilon whenever x minus x2 is smaller than delta. So by definition of a continuous function, the function f is continuous as at every point x2 belongs to I. The function
f is continuous if every x2 belongs to interval I and hence f is continuous on interval I. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए. Let f be uniformly continuous on an interval I and xn be a Cauchy sequence of elements in I. xn जो सीक्वेंस है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरवल I से आ रहे हैं in I. Then fxn is a Cauchy sequence. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है कि जो f है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल I में. So f is uniformly continuous on I. Therefore, for given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that for all x1, x2 belongs to I, fx1 minus fx2 is smaller than epsilon whenever x1 minus x2 is smaller than delta. एंड हमें ये भी पता है कि जो xn है वो एक कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस in I. So for epsilon greater than 0 there exists positive integer m such that xn minus xm is smaller than delta for all n greater than equal to m. ठीक है, अब देखिए xn जो है वो कॉची सीक्वेंस है. ठीक है, so xn minus xm, modulus of xn minus xm is smaller than delta. यहाँ पर ले लेते हैं हम for epsilon equals to delta. ठीक है, so modulus of xn minus xm is smaller than delta. This implies that fxn minus fxm is smaller than epsilon for all n greater than equal to m because f is uniformly continuous on I. Thus fxn is a Cauchy sequence. ठीक है, so जो ये था कि हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक m एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस xm इज स्मॉलर देन डेल्टा. xn एक सीक्वेंस है I इंटरवल में एंड f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है I में एंड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो f कॉन्टिन्यूस है एंड हमने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस है अगर किसी इंटरवल I में और कोई सीक्वेंस होगी xn जो x पर कन्वर्ज करेगी देन fxn कन्वर्ज टू fx. ठीक है, दैट मीन्स fx इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड f इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एम्प्लाइज f इज अ कॉची सीक्वेंस. तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर. ठीक है,
So thus fxn is a Cauchy sequence. एक और थ्योरम लिखिए. Let f and g are uniformly continuous on an interval I, then f plus g is uniformly continuous on I. प्रूफ लिखिए इसका. Since f and g are uniformly continuous on interval I, therefore for every epsilon greater than 0 there exists delta 1 greater than 0 and delta 2 greater than 0 such that for all x1, x2 belongs to I, fx2 minus fx1 is smaller than epsilon by 2 whenever x2 minus x1 is smaller than delta 1 and modulus of gx2 minus gx1 is smaller than epsilon by 2 whenever x2 minus x1 is smaller than delta 2. ठीक है. Let delta equals to minimum of delta 1, delta 2. Then f plus g x2 x1 equals to f x2 plus g x2 minus f x1 minus g x1 equals to f x2 minus f x1 plus g x2 minus g x1. ठीक है. मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा देते हैं. सो ये स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा fx2 माइनस fx1 का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ gx2 माइनस gx1. ठीक है. एंड देखिए यहाँ पर क्या है, fx2 माइनस fx1 का मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 2 व्हेनेवर x2 माइनस x1 इज स्मॉलर देन डेल्टा 1. और अब देखिए डेल्टा हमने क्या ले लिया था, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 का मिनिमम. तो fx2 माइनस fx1 का जो मॉडुलस है स्मॉलर देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा व्हेनेवर x2 माइनस x1 का जो मॉडुलस है इज स्मॉलर देन डेल्टा. Similarly, modulus of gx2 minus gx1 is smaller than epsilon by 2 whenever modulus of x2 minus x1 is smaller than delta. तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, f plus g of x2 minus f plus g of x1 is smaller than, यहाँ क्या आ गया था, modulus of fx2 minus fx1 which is smaller than epsilon by 2 plus modulus of gx2 minus gx1 which is also smaller than epsilon by 2. तो ये क्या आ गया, epsilon. Whenever x2 minus x1 is smaller than delta.
for all x1, x2 belongs to I. So by definition of uniform continuity, f plus g is uniformly continuous on I. ठीक है. So if f and g are uniformly continuous on an interval I, then f plus g is also uniformly continuous on interval I. Next लिखिए ellipsis function. So let A is subset of R and let f is a function from A to R if there exists a constant k belongs to R where k is greater than 0 such that fx minus fu is smaller than equal to k times modulus x minus u. For all x u belongs to A, then f is said to be a ellipsis function. या फिर हम कह सकते हैं कि satisfy a ellipsis condition on A. ठीक है. एंड एक रिजल्ट देखिए अब. If f is a function from interval I to R is a ellipsis function. Then f is uniformly continuous on I. रीजन देख लेते हैं क्यों. क्योंकि देखिए fx minus fu is smaller than equal to k x minus u. ठीक है. So whenever for all x u belongs to A. So whenever x minus u is smaller than delta. अब कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं. Let f and g be two uniformly continuous on an bounded open interval AB. Then the product fg is uniformly continuous on AB. Here boundedness is must. F and G are two uniformly continuous on bounded open interval. अगर bounded ये condition नहीं है then product of
two uniformly continuous function may not be uniformly continuous. ठीक है, सेकेंड लिखिए, अभी हमने क्या देखा था, एलिप्सिस अगर है फंक्शन देन वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो लिख सकते हैं अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन on an interval I may not be ellipsis function on I. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट एक्स ऑन इंटरवल 0 to 2. तो gx यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है बिकॉज ये बाउंडेड इंटरवल पर डिफाइन है और इस इंटरवल पे ये कॉन्टिन्यूअस है, अंडर रूट एक्स कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 0 to 2 में, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा बिकॉज एवरी continuous function in closed interval is uniformly continuous. ये भी मैं एक रिजल्ट लिख देती हूँ, every continuous function on closed interval is continuous, is uniformly continuous. क्लोज इंटरवल आई बोल देता है, इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन आई. तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है आई में, बट इट इज नॉट अ एलिप्सिस फंक्शन. ठीक है, लेट एफ एंड जी are two uniformly continuous function on interval I, and if in addition each function is bounded on I, then the product fg is uniformly continuous on I. Fine. अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Show that the function fx equals to x square is uniformly continuous in closed interval -1 to 1. Let epsilon is greater than 0 be given and x1, x2 belongs to closed interval -1 to 1. Then fx2 minus fx1 is equals to x2 whole square minus x1 whole square. ठीक है, it is equals to x2 minus x1, x2 plus x1. ठीक है, and it is equals to modulus
ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे कि मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, x2 माइनस x1 मॉडुलस ऑफ x2 प्लस x1। ठीक है, so it is smaller than equal to x2 plus x1 मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। हमने क्या कर दिया, मॉडुलस ऑफ x2 प्लस x1 को लिख दिया स्मॉलर देन इक्वल्स टू x2 मॉडुलस ऑफ x2 प्लस मॉडुलस ऑफ x1। मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखिए जो x1 है मॉडुलस ऑफ x1 इज स्मॉलर देन 1 एंड मॉडुलस ऑफ x2 इज आल्सो स्मॉलर देन 1, then modulus of x1 plus modulus of x2 is smaller than 2। ठीक है, modulus of x1 and modulus of x2 is smaller than 1 is because क्लोज इंटरवल जो i हमें दिया हुआ है वो है -1 to 1, तो 1 से छोटा ही कोई नंबर होगा। ठीक है, एंड मॉडुलस लगा देंगे, तो मॉडुलस ऑफ x1 इज स्मॉलर देन 1 एंड मॉडुलस ऑफ x2 इज आल्सो स्मॉलर देन 1। ठीक है, देन ये किससे छोटा हो गया, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, तो 2 मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट केस सच दैट मॉडुलस ऑफ fx2 माइनस fx1 इज स्मॉलर देन k मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। So f has a ellipsis function on -1 to 1 close interval. This implies that fx is uniformly continuous on interval I, which is close interval -1 to 1। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि भाई ये ellipsis हो गया तो uniformly continuous हो गया, बट हम ऐसे भी कर सकते हैं fx2 minus fx1 is smaller than epsilon whenever x2 minus x1 is smaller than epsilon by 4। ठीक है, epsilon by 4 को क्या लिखा, डेल्टा, for all x1 x2 belongs to -1 to 1। ठीक है, सो ये प्रूफ हो गया कि ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।